मुझे ऐसा लगता है, दिस इज माई प्योर माई ओन रोमांटिसिज्म, गलत भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है इन फ्यूचर वी विल हैव पॉलिटिकल पार्टी ऑफ मैन वर्सेस मशीन. Those political parties, they will give in the manifesto कि if we come in power we will denounce AI. ये मुझे विजिबली दिख रहा है, क्योंकि द वे थिंग्स आर, जिस तरह से रोबोट यूज करना शुरू हुआ है एट डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी सोच रही होगी कि मैन वर्सेस मशीन कुड बी ए गुड पॉलिटिकल फॉर्मूला. कि लुक, कितना अजीब लगेगा कि दरवाजा कोई मशीन खोल रही है. आई एम नॉट हैप्पी विद दैट. आई एम पर्सनली नॉट. आई विल वोट दैट कम पार्टी विच सेज कि नहीं, मैन विल बी देयर, नॉट मशीन. If I go to a restaurant and a robot comes to take decision, next time I won't go to that restaurant for sure. Some people may like it. They are liking, probably that's why it is happening. In various restaurants globally, good chains have started robot now. Ki they come to take your orders and they are at the reception. I want that human touch. तो मैं तो अगर कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी आती है जो मैन वर्सेस मशीन की बात करेगी, आई विल स्टैंड बाय द मैन साइड. No, they should, rather human versus machine. They have to be. They should not be missing that dimension of feminism. So human versus machine, that would be the right word. So maybe in future इस तरह से कुछ चले, human versus machine, क्योंकि जिस तरह से robots ला रहे हैं, this is unfair. This is unfair. अच्छा, generations might be feeling comfortable. That's a different thing. जैसे अलेक्सा लगभग हर घर में मेंबर हो गई धीरे धीरे, और it's getting, and I've seen youngsters talking to the Alexa like they are talking to a friend. This is very interesting thing. This is a new observation I found कि वो Alexa से ऐसे बात जैसे फ्रेंड से बात करते हैं. Alexa, how was your day today? I can't even conceive that idea कि okay, I can talk to the machine that way. There are people, they might be talking, and maybe in future Alexa के पास रिकॉर्ड भी रहेगा कि how you feel like. उसके पास artificial intelligence रहेगा. When you are in jolly mood, which songs you like. When you are depressed, which song you like. So you may say, Alexa, not feeling good, and will start your favorite song of that genre. ये सब हो रहा होगा, होता ही हो रहा. Logically speaking. So the way they are identifying your, आप एक गाना सेलेक्ट करो, वो आपका एक टेलर मेड लिस्ट बना देते हैं, प्लेलिस्ट, कि इस समय लग रहा आप ऐसे गाने सुनना चाहते हो. So clearly indicating for me that human touch is important. कुछ लोगों के लिए नहीं होगा, and that's how this could be a future political agenda. ऐसा दिखता है. I don't know how far that is true. होगा नहीं होगा भगवान जाने, but this is what it might be. So democracy is, in fact, there's a very good phrase used by that fellow Mahajan. It's democracy, CRAZY, democracy, and he writes this way: of the people, for the people, and by the people. That is his satire, and I think the satire is, he wrote the book called Democracy. Wonderful satire if you are a satire lover. The name of the book is Democracy. So he said 1 vote is equal to 500 rupees plus IMFL, one bottle. So that's how the book starts, so this is how the idea of democracy. So democracy is an ideal type, exists nowhere. But yes, in the given option, this is definitely the best model. In the given options, this is the best model. Less of elitism means more of democracy. That's how you should be looking at this. And I think Adam Gondvi has written a very good line. तुम जब कभी इस देश का इतिहास लिखोगे, क्या उसमें मेरी भूख मेरी प्यास लिखोगे? घर का मुखिया मर गया, बच्चे हो गए अनाथ, तुम तो आंकड़ों में सिर्फ एक लाश लिखोगे. बाकी लाशों का क्या? Those who got sacrificed, because of that. So ऐसा होता है कि, so those who are not understanding Hindi, this is a very famous line by one of the noted Marxist writer, Adam Gondvi. And he said this way, कि whenever you are going to write history, will you talk about us, our poverty, our helplessness? Perhaps no. And that's what your history is, with due respect. Love affair and war affair of top 5%. यही तो, किसने किसे शादी की, किसने किसको हराया. या कब अभी 2024 की हिस्ट्री लिखी जाएगी जिसमें सुनील कहीं आएगा? नहीं आएगा. उसमें राहुल गांधी जी आएंगे, उसमें मोदी जी आएंगे, उसमें अदानी जी आएंगे, उसमें रॉयल वेडिंग आएगी. यस, जब डायरी बनेगी 2024 की तो इन सब चीजों की बात होगी. क्या उसमें सुनील का नाम आएगा कहीं? नहीं. तो तुम जब कभी इस देश का इतिहास लिखो, क्या मेरी भूख मेरी प्यास लिखोगे? विल यू टॉक अबाउट मी ऑल्सो? नो. The head of the family passed away, and for you to just one fellow died. What about the other members? What about the other members? So that